Okay, so hello everyone, my dear bachches and bachis. How are you all? Hope ସମସ୍ତେ बहुत ही भलरे थिबो and miss तो मते बिल्कुल भी करना थिबो. Anyway, so hello everyone, I'm your Sudipta ma'am, welcoming you all to Vedang Classes powered by Vedang Institute of Technology. बहुत दिन ହେଇଗଲା କି? ମିସ୍ କରୁଥିଲ? ଏତେ ମିସ୍ କରୁଥିଲ? ନା ଲାଗୁନଥିଲା ତମ ମାନେ ମିସ୍ କଲା ଭଳି? 10 PM ହେଲେ only miss କରୁଥିଲ? ଆରେ ବା I'm absolutely fine. Thank you for thank you for everything. Start करिवा क्लास तो माने एमती मिस करू थाओ जानि कि बहुत खुशी लागुची बट एनीवे मो एबे बैक हे जाई छी आज यूजुअल तो मानकर क्लास टाइमिंग रहिबो रात 10 टा रु 11 टा तो मानकर क्लास ठीक अछि जय जगन्नाथ एवरीवन जय जगन्नाथ ए सारा मिस करथले जे म रहि पालेनी पळै आसली जल्दी सो देखो डेट अरे नवंबर कोन लागि जाई छी डिसेंबर को छाड़ डेट डिसेंबर एटा हला चेंज कर देबी काले ऑलरेडी तो मैंने जानी छो टेस्ट सीरीज केते कोन प्राइस रे आछी यस द टेस्ट सीरीज तुम मानकर केते लाइक फास्ट देखि दियंतु स्मृति टेस्ट सीरीज ऑल ओडिसा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पे जोटा कि लाइफ टाइम पे अपन नै परिबे जेमिति अपन मानकर महापैक अछि जहां अंडर रे कि अपन माने सब एग्जामिनेशन दे परिबे ओके भाग्यदीप कैलेंडर निहाती PN7 लगेबा तो एटा आपनकर लाइफ टाइम पई फ्री रहूची जोटा कि स्मृति टेस्ट सीरीज एंड आपण माने ओ OSSC टेस्ट सीरीज नोचोनी PEO पई 1 ईयर रहूची 99 वैलिडिटी जस्ट 100 रुपीस देन RI मीन मेंस पई नोचोंती आपण माने 1 ईयर 199 SSC CGL दिस आर द टेस्ट सीरीज जोटा आपण माने चाहिबे प्रिपेयर करिबा लागि मॉक देबा लागि देन एटा आपण माने को हेल्प करिवो ओके After that, see the Odisha civil service preparation pai jodi apan mane koruchanti then the Biswas OCS pre plus like 2025-26 upcoming year pai jodi apan mane preparation koruchanti then 1 year pai validity 6999 offer price achi Biswas pre plus mail jodi apan 2025-26 pai use koruchanti tahale 1.5 year validity 11,1999 आसीबो देन मेंस बैच पई 2024-25 जोटा कि ऑलरेडी आपण माने प्री देइचंती एंड क्लियर हे जाइची प्रीलिम्स मेंस पई प्रिपरेशन करूचंती देन दिस विल हेल्प यू अ लॉट दैट इज 8,999 आफ्टर दैट ऑप्शनल बैच जति आपण माने आपनकर ऑप्शनल पेपर अकॉर्डिंग नउचंती ताहाले 1 ईयर पई 4,999 रहइबो हैला सेटा सब क्लियर हे जिवो डोंट वरी Yes, don't forget to use SR10 and AK10. Okay. Today you have 10% extra discount पाई परिवे and same thing for the Odisha teaching examination Drona, Chanakya and Kautilya. Drona अच्छी SSB TCT 1 year validity price is 1499 with Chanakya beat फिलांक पाई अच्छी 2 years validity 1999 only. Kautilya that is the for specifically KVS and NVS ପାଇଁ जोटा कि 1.5 year validity 2499 होची price and एठी भी आपण माने AK10 and oh sorry AK नहीं FP I forgot okay FP10 यूज करिवे या फिर SR10 यूज करि परिवे देन आपण माने 10% डिस्काउंट पाई परिवे किछि भी क्वेरीज अछि रिगार्डिंग जदि आपण माने कोनोसी बैच नेबा को चाहउचंती ए नंबर को टिके कांटेक्ट करि देबे तो आपण माने प्रॉपर गाइड हिसबे हला आसा Oh, today's motivation puns for you all that don't cry over the past. What it says? Don't cry over the past, it's gone. Don't stress about thinking about what na future e kon habo. It has not arrived yet.
but live in the present and make it beautiful. आगो को कौन हबो विगत दिन रे कौन हेई जाइछि ताको रिपेंट करी की किछि लाभ नाही तो माने प्रेजेंट रे बंचो प्रेजेंट को ही ब्यूटीफुल करो सो दैट तमानकर फ्यूचर ब्यूटीफुल हबो प्रेजेंट रे परिश्रम करो सो दैट तमरा फ्यूचर रे जे कोनोसी एग्जामिनेशन क्रैक हे जिवो जो एग्जाम खराब हे जाइछि जो त माने बसी की भाबिबो कि एग्जाम खराब हे गला नेक्स्ट कोन करिवि देन आपण मानकर आउट गुड एग्जामिनेशन आसी जिवो मोस्ट प्रोबेबली तमानकर एसआई एग्जामिनेशन आसी जिवो तो माने आरआई एग्जाम काई खराब कला भाबी तो जोटा हे जाइछि जस्ट लेट देम गो जोटा हेबा को आसुची ता विषय रे भाबनी प्रेजेंट रे बंचो आजिरो डे रे तुम माने कोन बेस्ट तमरो देलो टोटल होल डे जते बेला आपनकर सरी जीवो नाइट रे बसी की बस गोटे शेड्यूल गोटे नोट रे मेंटेन करो कि होल डे टा मोर प्रोडक्टिव डे रे जाइछि ना अनप्रोडक्टिव डे रे जाइछि यदि प्रोडक्टिव डे रे जाइछि मु टारगेट सेट करिथिली सब कोन मु क्लियर करिछि कि जति की टारगेट मु सेट करिथिली आजि मु एतिकिटा सपोज 50 नंबर्स ऑफ मैथ या फिर 20 नंबर्स ऑफ मैथ एज पर योर कैपेबिलिटी त माने करिवार थिला तो माने करिछो कि मते एतिकिटा जीके पोर्शन कवर अप करिवार थिला करिछो कि रीजनिंग एतिकिटा सॉल्व करिवार थिला करिछो कि तो टोटल गोल गोटे सेट करो एंड जति गोटे दिन रे जति की तमे गोल सेट करिछो सेटा को क्लियर कर दोछो अचीव कर दोछो टिक मारिबो तले राति रे आपण माने बसिबे क्लास एंड रे राति 12टा रे बसी की टिक मारिबे ना जेते बेले सब टिक गुडा आपनकर मारी हे जाइथिबो सेते जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलिबो दैट इज द लेवल अप ओके सेटा ही चलो जीबा So the first question in front of you that which women's organization was founded by Sarojini Naidu in 1917? It's 1917 guys. Satish bhai टिके class को telegram रे share करी दियो because phone पुनी मोर खराब हे एतर पूरा जाईछि तो ए फोन रे telegram मोर नाही. Okay दियो the Women's Indian Association. What will be right answer? राइट आंसर कौन हबो मते कुओ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन समस्तिंगर ऑप्शन बी आसुची एते कॉन्फिडेंस ना एटा कॉन्फिडेंट कहिबी ना ओवर कॉन्फिडेंट एटा कॉन्फिडेंट कहिबी ना ओवर कॉन्फिडेंट न्यू फोन नाही रे न्यू फोन नाही एंती गोटे स्टेप इन फोन रखिची आ ऑप्शन बी ना ना देखो पायल कहलानी ऑप्शन ए पायल को भी टिके कंसीडर करो तुम मैंने एमती ऑप्शन ए ऑप्शन बी कहले केमती हबो को मते कोन हबो कुह मते ऑप्शन बी जो माने मारुचो को खुशी रे मु तुमको एग्जैक्टली 1970 कथा पचारिची आपण माने जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन पचारसंती द एनएफआईडब्ल्यू आपनकर हेइथिला केबे मते कोहंतु व्हेन इन द एनएफआईडब्ल्यू विषय रे कहूची तो ये आपनकर केबे हेइथिला ना 1954 रे हेइथिला केबे हेइथिला 1954 रे हेइथिला होना नै मते कोहंतु यस और नो यस सो मोस्ट इंपोर्टेंटली हमें कहि परिबा दैट इज फाउंडेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस द पोस्ट इंडिपेंडेंस आपण एटा कहि परिबे कोन ना इट इज हैपेंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस सो इट इज द पोस्ट इंडिपेंडेंट इवेंट बट वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन आपनकर 1917 रे हेइथिला क्लियर ये तो वुमेन्स इंडिया यस वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन आपनकर 1970 रे हेइथिला एते की जिंसा क्लियर और हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट तो 1917 ने को जागा रे हेइथिला जदी क्वेश्चंस आसी गला ताहाले कहि परिबो कि एग्जैक्टली मद्रास रे हेइथिला कोठी ना आद्यार गोटे जागा अछि मद्रास रो कोठी ना आद्यार द प्लेस इज इन द मद्रास एठी आपनकर फर्स्ट टाइम पे द इवेंट दैट द वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन गठन हेइथिला फाउंडर थिले आनी बेसंत तांको सहित कोन आपण मैग्रेट थिले कजिन्स सरोजिनी नायडू भी थिले एंड द फर्स्ट ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन डिमांडिंग वुमेन्स सफरेज लाइक हमर कोन वोटिंग राइट्स वुमेन्स कर फर्स्ट वोटिंग राइट्स भी आपनकर आगुरु ऐड ऑन हेइ नथिला तो वुमेन्स वोटिंग राइट गाइस एठी फर्स्ट टाइम पे ऐड हेइथिला हैला वुमेन्स फर्स्ट वोटिंग राइट Am I clear? Pranam. Samasthinku pranam. Samasthinku welcome to my class again. Okay. Jiba. Next question ko jiba. Or having any doubt mate kahi diyo.
एथिरे आपनकर वर्क ऑन द लाइक वुमेन एम्पावरमेंट उपरे विडो रीमैरेज उपरे लाइक आमे कहि परिबा जो पुरोधा प्रथा थिला पुरोधा एबोलिएशन हैला सोशल रिफॉर्म्स हैला ए सब सोशल रिफॉर्म्स जते सब वुमेन मानक ऊपर नै कि हेथिला एटा आपनकर वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन द्वारा ही हेथिला that played a very major role in early national movement plus हमें कहि परिबा women's political rights okay also me समस्त का प्रणाम एक्सेप्ट कली भूली भी कोथि पई लो चलो सो जिबा नेक्स्ट जिबा तो the women's indian association WIA was founded in 1917 by Annie Besant, Margaret Cousins and Sarojini Naidu and all clear next question for you question for like sorry which of the following sites provides evidence of early urban planning during the middle iron age in India a questions already बहुत type ro examination रे पढ़ी सारी छी the date have already mentioned here you can here overlook okay आसा कौन पचारी छी question देखि त टिके आउ थरे भलो से ऑप्शन बी आंसर पूरा देखि देइथिला हां मु जानि परछि दीपक कुमार पंडा तमे आंसर देखि ही देइछो सिटिंग इन माय क्लास but why option B is correct can देखिनी मैं हाँ राका बाबू बहुत ही मस्त अच्छी तमे पचाइला मु आहुरी मस्त हे गले सेटा ही तो कहूची PN7 just have some patience मु कहूची ता विषय तो मते कुह एटा आंसर दोचो कोन ना दैट इज द कौसंबी तो ए कौसंबी आपनकर एग्जैक्टली कोठी प्रेजेंट अछि कैपिटल थिला ये आपनकर बस्ता महाजनपद टाइम रे बस्ता महाजन टाइम बत्स हां बत्स महाजनपद टाइम रे ये कैपिटल थिला करेंटली ये लोकेट अछि एट द उत्तर प्रदेश ये कोठी बे प्रेजेंट अछि ना ये हमर उत्तर प्रदेश रे प्रेजेंट अछि हला clear that stories during the middle iron age upcoming हमें कहि परिबा 1000 ru 600 BC before common era okay that shows the fortification the streets the drainage the residential units and the urban planning too okay and सेत्र एविडेंस आपण माने कोठु पाई परिबे ना द प्लान्ड स्ट्रीट्स विथ द कोन बेक्ड ब्रिक्स फर्स्ट टाइम पे आपण एबे देखुचंती आपण माने कोन इटा भाटी रे जाई कि इटा माने पोडा होचंती तापर इटाटा कोन ना बहुत ही स्ट्रांग होची कंचा इटा तो स्ट्रांग न थाय इटा भाटी रे पोडा हैला पर स्ट्रांग आसे तो जो स्ट्रांग फर्स्ट टाइम पे यूज कोठ होईची ना हियर इज द कौसंबी बिकॉज़ एठी आपणकर यूज हेतिला फर्स्ट टाइम पे बेक्ड ब्रिक्स and the planned streets को पटे गले को रास्ता सहित क्रॉस करिवो and आमे जाई परिबा तो ए सब फास्ट आपनकर कोडी ना लेटर आयरन एज स्टार्ट हेतिला फर्स्ट टाइम पे डिफेंस वॉल्स लाइक आगुर कोन लोक माने केमति रहउतिले जोठी गोटे ग्रुपिज्म क्रिएट होउतिले सेठी से माने रह जाउतिले प्रॉपर घर हैला परे कोन ना घर हैला परे गोटे सोसाइटी हैला गोटे एरिया रे वन्य जंतु माने अटैक न करंतु तो ता पय कोन प्रॉपर गोटे डिफेंसिव वॉल तयारी करथिले तो सेटा केबे हैला ना इन दैट एरा and the early township layout everything has like kon flourished heitila at that time etik buझी परिबो and even the coins and the terracotta art craft ei सब आपनकर यूज हेतिला and develop हेतिला flourished हेतिला ए टाइम ठीक अछि चलो so buddha's visit and early buddhist activities also flourished at that time ठीक अछि एतिक बुझी परलो and मते कहला मोहेनजोदारो टाइम रे कोन हेतिला having any idea कौन होउछु तम मानकर कौन होउछु तम मानकर है अच्छा का सहित हैला मु जानिनी हां हो भलो कथा अच्छा तो मोहेनजोदारो विषय रे कुआ मने पडुनी किछि मधुस्मिता केते दिन क्लास गैप हैला सब भूली गलनी त माने यस ग्रेट बात सहित हमें रिलेट करि परिबा मिडिल आयरन एज सहित रिलेट करि परिबा बट द मोहेनजोदारो बिलोंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन द IVC हमें ताको कहूचे दैट्स फेमस फॉर द ग्रेट बाथ इवन द ग्रैनरी कोन आसुची ना ग्रेट बाथ आसीबो इठी ग्रैनरी आसीबो आ कोन आसीबो टी माने पकेइलो ग्रेट बाथ ग्रैनरी
द Citadel lower town आपणकर एठी आसुची ना नहीं द Citadel lower town the Citadel lower town everything okay हाँ सी गपुची सेटा तार लॉस थोड़ी ना हमर लॉस होची लेट देम टॉक हमर कोन जाउची को मते ओके चलो तो सेम आपण माने मोहनजोदारो को भी रिलेट करि परिबे द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन सहित बट द पीरियड इज द ब्रोंज पीरियड दैट वी नो एंड द अर्बन प्लानिंग एक्जिस्टिंग बट नॉट इन द आयरन एज ओके दैट फेमस फॉर मोहनजोदारो भी आपनकर सेम ग्रानरी आपनकर सिटाडेल हेला आपनकर वॉल्स हेला माने कुओ फर्स्ट टाइम कोला हेतिला आपनकर मने अछि कोठी ना सॉरी मोहनजोदारो सहित रिलेट करि परिबो ओके तो हरप्पा सहित आपण माने रिलेट करि परिबे द अर्लीस्ट प्लान्ड अर्बन सेंटर बट नॉट इन द आयरन एज clear next question aso so Kausambi is an archaeological site in the present day Uttar Pradesh re rahichi next who was the first president of the All India Muslim League founded in 1906 the All India Muslim League आपनकर कोठी हेतिला जल्दी कुआ All India Muslim League आपनकर फाउंड हेतिला in 1906 बट कहा द्वारा हेतिला मते टिके कहिलो कहा द्वारा हेतिला anyone can guess it who was the first president of All India Muslim League option C कोथि पे option C आसुची कोथि पे option C मोहम्मद अली जिन्ना आसी गले भाभी चिंती के आंसर दियो भाभी चिंती के आंसर दियो option D आसी गले अरे ऑप्शन ए भी कहि परिबो ऑप्शन बी भी कहि परिबो सी ऑप्शन बी भी हे परिबो द करेक्ट आंसर इज आगा खान 3 and whose full name was Sar Sultan Muhammad Shah he was the first president of the All India Muslim League which was founded in 1906 केबे हेतिला ओ शिट ब्लर हे गला रहिलो हां देखु छी I just forgot to do that. एबे क्लियर अछि हाँ अच्छा तो was the first president that is आपण माने आगा खान 3 मारले भी हबो सार सुल्तान मोहम्मद शाह मारले भी हबो but famously he was known as the Aga Khan तांकु रिलेट करि परिबो yes तो सार सुल्तान मोहम्मद शाह तांकु कह दउतले आगा खान 3 that he was the person same person ही सी थिले जेकी तांका फुल नाही रहउची सार सुल्तान कोन मोहम्मद शाह आगा खान 3 हैला the first आमे कहि परिबा the 48th imam of the Nizari Islamils हैला आगा खान कफकी I can okay चलो नेक्स्ट बा मोहम्मद अली जिन्ना जो आपण माने आंसर दउचंदी कैन एनीबॉडी रिलेट कि मोहम्मद अली जिन्ना को हमें कोथि में मन रखिबा ना ही जॉइंड मुस्लिम लीग केबे ना 1913 मसिया रे से जॉइन करिथिले जो आपण माने कहउचंती अली जिन्ना आपणकर ये जॉइन करिथिले 1913 रे आपणकर जॉइन करथिले ही वाज नॉट अ फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग ये बहुत परे हेथिले लाइक आफ्टर 1919 से परे हेथिले तो आफ्टर 1919 से आपणकर प्रेसिडेंटशिप करिथिले कार मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग रो एंड तांकू कोन को जाउथला ना क्वीत ई आजम कोन को जाउथला ना क्वीत ई आजम बोली को जाउथला ही वाज द लीडर ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट आंसर है मन रखि पारे ठीक अछि नेक्स्ट चलो मते को नवाब सलीमुल्लाह खान जानिछो एनी आईडिया ये आपनकर ढाका ठारे जो मुस्लिम लीग हेतिला मुस्लिम लीडर्स मान को नै कि मीटिंग करथले ढाका ठारे अक्टोबर 1906 मसिया रे अक्टोबर 1906 मसिया रे ढाका ठारे मुस्लिम मान को नै कि जते बेले मीटिंग करिथिले he was played a key role in establishing of the Muslim League provided the financial support also but he was not the president ever हैला आस नेक्स्ट तो मते को ए जियोग्राफिक रीजन दैट
has separate but similar ecosystems characterized by a distinct climate is called what? A geographic region that has separate but similar ecosystems characterized by a distinct climate is called like a ecosystem, like a biosphere, like an organism or the biome. कौन आमे ताकू कहूचे? जल्दी कुआ. कौन कहूचे? Option A, ecosystem. Ecosystem केमती है इसबरे? A geographic region that has separate but similar in the ecosystems characterized. माने सेटा को ecosystem केमती होबो? Ecosystem character सहित ताकू same करा जाउछ. ताकू compare करके yes की कहले ये study with sonal. अरे वाह, very good. That right answer will be the biome. कौन हबो म देखो? That is the biome. So ecosystem कौन कहउछ ना? This is a smaller unit. Like biotic plus abiotic component मिसी के आपनकर कोन होंती? The biotic here is the biotic component plus abiotic component मिसी की होंती ecosystem. हरा नहीं मते को एग्जांपल अपन नहीं परिबे फॉन्ड रो, एग्जांपल अपन मा नहीं परिबे फॉरेस्ट पैचेस रो, अपन नहीं परिबे लेक इकोसिस्टम रो. That's not defined by the global climate pattern. तो ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न अकॉर्डिंग हम जो कहिबा इकोसिस्टम को केमती करा जायछि ना दैट्स अ स्मॉल स्केल. बायोम हेले कोन हबो ना दैट इज द लार्ज स्केल. एति की मन रखि परिबो. इकोसिस्टम हेले कोन दैट स्मॉल, बायोम हेले कोन हबो पूरा वायुमंडल भलिया से बड़. सो लार्ज स्केल अकॉर्डिंग हम ताको मन रखि परिबा. बायोस्फीयर कहले कोन बुझिबो तम माने दैट इज द लार्जेस्ट इको माने इकोलॉजिकल लेवल हम कहि परिबा बट सेटा इकोसिस्टम तो बड़ बट इको बायोम को आपनकर सान रहिबो. दैट इंक्लूड्स all the ecosystem on the earth. आपनकर बायोस्फीयर आसीबो कोन इकोसिस्टम जेते इकोसिस्टम्स आपनकर आसीबो बायोटिक हेला बायोटिक हेला सब आपनकर मिसी की बायोस्फीयर बनेबे. The atmosphere plus the lithosphere plus the hydrosphere life zone that total आपनकर मिसी गले कोन atmosphere lithosphere and आपनकर hydrosphere एटा को आपन लिखि परिबे. The atmosphere, the lithosphere, okay, lithosphere plus then आपनकर atmosphere, lithosphere and the hydrosphere तो ये सब मिसी की आपनकर कोन कंसिस्ट करंती ना as the biosphere. And what is organism? जेते बेले स्पेसिफिकली गोटी जनक कथा कुआ गला that means a single living individual कथा कुआ गला ताहाले हम जानछु this is a single organism. That means आपन ट्री हेला like no matter the flora or the fauna, the trees को कहि परिबे, the animal को कहि परिबे, टाइगर माने trees को कहि परिबे, सेमली टाइगर को कहि परिबे, सेमली बैक्टीरिया को भी कहि परिबे. These all are, this is not a reason of the climate based classification but the biome हमको कौन कहउची this is a large geographical region जो थरे हमें डिफाइन करि पारु छे क्लाइमेट को प्लस तार वेजिटेशन को प्लस तार एनिमल्स ग्रुप को. माने गोटे एनिमल को क्लाइमेट रे बंचुची तार हैबिटेट कोन रहउची. सो हमें एठी कहि परिबा कि व्हाट ना biome is defined as the climate plus vegetation climate plus vegetation plus what ना animals. तो एठी आपण माने fauna लिखि परिबे. हरा नै मते को कोन हबो ना fauna. वो पढेला बेले बाय द वे अटेंशन दिएनी. पढेला बेले मु पाठ ही पढाए. मझिरे जेते ब्रेक निए सेते बेले पूरा अटेंशन त मानकु देबी. हैला सेते बेले सब अनै की थियो जो माने अटेंशन नेबा कथा दे दे. डोंट वरी. आसो तो यार एग्जांपल आपण माने कोन नेबे ना तुंद्रा नेबे, द टाइगर नेबे, लाइक वेराइटीज ऑफ टाइगर्स नहीं परिबे, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं परिबे, डेजर्ट नहीं परिबे, तो ग्रासलैंड नहीं परिबे. गॉट इट. चल नेक्स्ट तो बायोम कहले मन रखिबो कोन ना बी फॉर बायोम, बी फॉर बिग क्लाइमेट. तो बी क्लाइमेट बेस्ड हे गले आपनकर कोन आसीबो ना बायोम. नेक्स्ट so geographical region with separated but similar ecosystem characterized by distinct climate is called the biome. Next मते कुह in astronomy. Okay, questions important रहउची. Keep it in your mind. Class रे मजाक मस्ती टिके परे करबा हमें लास्ट 10 मिनिट पूरा देबी आपण मानन को मस्ती मजाक करिया लागि. एबे टिके क्वेश्चन ऊपर फोकस कर हैला. आसा तो मते कुह in astronomy the Cassiopeia, okay, is a constellation in the northern sky that is easily identified by its cluster of how many bright stars.
जिते बेले भी आपन को ब्राइट स्टार कथा कहि देला तार सब बेले कोन मन रखिबे ना तार सेफ रहूची लाइक दिस तो दिस हेले एठी आपनकर गोटे स्टार रही जिवो तेरे स्टार मु बहुत खराब ही करे बट स्टिल त मन को बुझूची व्हाटएवर फिर से भूले गला व्हाटएवर चलो एंती कर देबा हैला तो एठी आपनकर स्टार गोटे रहिला देन अगेन आपनकर एठी गोटे स्टार देन एठी गोटे स्टार 1 2 3 एंड अगेन एठी गोटे स्टार 4 एंड अगेन एठी गोटे स्टार तो टोटल केतेटा स्टार हैला मते कुहो हां 7 स्टार तो पूरा मुझे तुमको सप्तर्षि मंडल कथा कहूची रे तमन सप्तर्षि मंडल कथा कहूची बिग डिफर कथा पचारि छि कि सप्तर्षि मंडल को आपनकर बिग डिफर कहा जाउची the some constellation have 7 major stars ताकू हमें बिग डिफर बोली कहूचे ए गोटे गोटे इंग्लिश वर्ड त माने मिस करूचो गोटे गोटे इंग्लिश वर्ड रो मीनिंग बुझी पारु ना तो गोटे को स्काई भीतर जदि सब तारा मानक विषय पचरा गला धाबा बाड़ा सप्तर्षि मंडल ता माने सातटा तारा हो ना एमिति आंसर दोउचो the Cassiopeia is always depicted with 5 stars forming a W और एटा आपनकर समटाइम्स M शेप भी देखा जाय W शेप देखा जीवो और M शेप देखा जीवो को पोजीशन रहिबो एठी गोटे तारा एठी गोटे तारा एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे टोटल आपनकर केतेटा तारा रहिबो मते देखो ना पांचटा ही तारा रहिबो यस राइट और रॉन्ग मते देखो हां सेइडा सब मन रखिता सेइडा सब मन रखिता एग्जाम रे पडिबो पांचटा हेले आपन मानकर आसीबो स्केडर कैप तहसील एंड सेइन आ गोटे आपनकर आर रे ना थिला जोटा कि भूली जाउची समथिंग रुकपा एमती कोनटे थिला हैला जोटा कि आपनकर नॉर्थर्न स्काई रे देखा जाय क्लियर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो एठी आपनकर लेखा ही जाय टोटल मेंशन करा जाय छी व्हाट इज अ रेस्ट एरिया ऑफ लैंड कोन पचारि छी 6 को पढिसु अच्छा what is a raised area of land submerged in a particular river or lake called गोटे particular river देखो क्वेश्चंस को पढ़ो त माने इजीली आंसर देई पारियो ओके तो मते कुह व्हाट विल बी द राइट आंसर जल्दी हां ईश्वरी त मानकर पर माउथ ओपनिंग हेतिबो ईश्वरी माने कोन होची कि आपनकर रिवर टा जो पॉइंट रे जाई कि सपोज दिस इज योर होल ओशन एंड एठी आपनकर गोटे पॉइंट रु आसिला कोन ना रिवर आसी कि ए पॉइंट रे पुनी एठी ओपन हैला एठु गोटे रिवर आसिला एठी आपनकर ओपन हैला तो ए जो पोर्शन टा वाइड पोर्शन टा रहूची ताकू हमें ही कहूची ईश्वरी जोटा ओपनिंग हेजी आपनकर कोडे ओशन आडको टुवर्ड्स द ओशन द रिवर माउथ इज ओपनिंग टुवर्ड्स द ओशन द पॉइंट इज कॉल्ड द ईश्वरी गॉट इट ताकू हमें कौन कहूचे एटा को हमें कौन कहिबा ना ताकू डेल्टा कहिबा सी the delta is a raised area of the land formed by the deposition of the sediment carried by a river as the flow leaves it mountain enters a slower moving body of water such as a lake or the ocean तो याको हमें कौन कहूचे ना डेल्टा बोली कहूचे क्लियर और हैविंग एनी डाउट तो डेल्टा कहले कौन बुझिबो ना दैट रेज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म एट द रिवर माउथ क्लियर that forms due to the sedimental deposition that creates a islands and the distributaries example आपण माने गंगा ब्रह्मपुत्र रो नै परिबे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बढ़िया अछि गोदावरी डेल्टा को भी नै परिबे कैस्मेंट और द वाटरशेड यस क्लियर एति की बुझी पालन नै मते को वाटरशेड कहले कोन पूछो ना दैट इज द ड्रेनेज बेसिन वाटरशेड कहले दैट इज द ड्रेनेज बेसिन होना नै मते को and Ishwari already told you and reservoir कहले कोन बुझो that is the artificial thing हमें कहि परिबा the reservoir that is human made or the natural water storage भी कोटी कोटी रहउची reservoir हेई पारुची but that created by the dam behind the rivers clear कोन वाटर फ्लो को स्टॉप करिबा लागि ता सहित किछि रिलेशन नाही like it artificial हमें कहि परिबा that to store the water for irrigation for the drinking or for the hydropowers that is not a landform not a raised delta okay ask next mate kuha the lanthanides kon pacharichi the lanthanides along with
Lanthanides along with which two elements are called rare earth elements? तो आपण मान को टोटल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल ता जदी मन रखि देबे ताले ए टाइप रे क्वेश्चंस को इजीली आंसर करि पारिबे कोन कहउछ यार आंसर टिके देखिबा यार आंसर कोन कहउछ टिके देखिबा ऑप्शन बी कोथि पई ऑप्शन बी दीपक कुमार पंडा पंडा बाबू ऑप्शन बी कोथि पई हबो तो गोटा जाक मते देखा जाउची ऑप्शन सी हबो नाउडा टिके डिफिकल्ट लागुची ना कि आसा so right answer कोन एठी हबो that is the yttrium and the scandium कोन हबो yttrium and the scandium why not option a the molybdenum कोन अछि एटा हां the molybdenum and the palladium that are both the transition metal बोली हमें ताकू कहउचे that is used as the catalyst alloys and the industry that is not a part of the rare earth group but a group को हमें कोन कहउचे that is the transition metal ए दुटा को हमें कोन कहउचे दिस इज नोन एज द ट्रांजिशन मेटल अगेन व्हाट इज अबाउट द रुथेनियम एंड द जिरकोनियम रुथेनियम एंड जिरकोनियम को हमें कोन कहि परिबा क्वेश्चन से आसी परिबो दिस आल्सो टू नोन एज द ट्रांजिशन मेटल व्हाट्स अबाउट द वेनेडियम एंड द निवियम न्यूवियम व्हाट इज द वेनेडियम एंड द न्यूवियम मते कहिला the metals used for the high strength steel and alloys कोथि पई ना गोटे steel and alloys को strength provide करिबा लागि आपण माने देखिथिबे किछि steel आपणकर अछि एमिति भरिबो हाथ रे पिटि दबो चेपा हेसिबो एंड किछि एमिति स्ट्रांग वाला steel अछि त माने जते बाडेले भी चेपा हबनी सेथिरे amount of the vanadium and आपणकर न्यूवियम कोन कैपेसिटी अधिक थाए दैट्स व्हाई से कोन इजीली चेपा हुई strength provide करे हला ट्रांजिशन एलिमेंट केमती हबरे आपणकर सेटा आपणकर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट रे अछि ना आपणकर 17th रेयर एलिमेंट रे आपणकर मोनाजाइट अछि हन नै मते को ता सहित की अछि को मते the yttrium scandium these are the 17th rare elements जोटा कि हम REES ग्रुप रे कहउचे आ थरे चेक करि दियो स्कैंडियम एंड निवियम आपनकर ट्रांजिशन एलिमेंट मोइटी कहछि त माने को yttrium एंड द स्कैंडियम सॉरी स्कैंडियम नै हां yttrium एंड स्कैंडियम आपनकर आसी जिवे मोनाजाइट ऑप्शन नै कारण आपनकर मोनाजाइट हैला बास्नासाइट हैला एगुडा आपनकर कोथि आसीबे ना एज अ रेयर अर्थ एलिमेंट ता सहित yttrium एंड स्कैंडियम थु जोटा कि आपनकर इलेक्ट्रॉनिक्स रे हैला लेजर्स रे हैला आपनकर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बैटरी यूज हुए सेथिरे भी आपनकर एटा यूज करा जाय चेक देखो the term rare earth element refers to the group 17 elements including the 15 lanthanides from the lanthanum to the lutetium the group 17 भीतर आपण माने चेक करि दियंतु प्रेजेंट अछि ना नै हला चेक करियो देन मते कहि नेक्स्ट आसा which of the following generally form at the upper part of river रे आपनकर generally कोटा form हुई मते कहिला quick which of the following generally form at the upper part of the river कोन आसुची जो गंड आपनकर फ्लड प्लेन्स आपनकर तयारी हुए अच्छा फ्लड प्लेन्स तयारी हे जाय गजब बेइज्जती करछ निज निजर ये आहुरी पिला आसिलेनी हमर राका बाबू कहउचंती एठी त ऑक्सबो लेक भी हे जाय ते हमर कहउचंती ऑक्सबो लेक हे जाय ऑक्सबो लेक आपनकर जनरली कोठी ना लोयर और द लेट मिडिल कोर्स रे आपनकर हुई that created when the meanders get cut off ए meanders आपनकर जते बेले गट कट ऑफ हे जीवो सेते बेले कर गोटे appears हबो as a कोन crescent shaped lakes the different type रो lake shaped हबो form हबो ताको हमें कहबा that is the lower version मैम मोर रेंज पाउनी क्वेश्चन ऊपर आ टिके इजी क्वेश्चन केते दिन इजी क्वेश्चंस करिवो ए भला क्वेश्चन आसले ऊपर करते मैम क्वेश्चन बहुत टफ पड़ितला एग्जाम रे टफ क्वेश्चन तो करके गले इजी को अटेंड करि परिबो ना इजी करके गले टफ को तो देखले मुंडा बिंदिबो ओ त माने कहू जो जदी बाकी परे मते कहबनी कि मैम एग्जाम रे बहुत टफ क्वेश्चन आसीतिला बिकॉज़ टफ क्वेश्चन सब बेले आनले त माने एमिति नखरा देखौछ एमिति ही नखरा देखौछ हां आसा तो ऊपर पर्सन ने सब बेले आपनकर गंड फॉर्म
हैला मिंडर्स कहले हमें जानि छे दैट इज फॉर्म अ मिडिल कोर्स ड्यू टू द लैटरल इरोजन आपनकर एटा फॉर्म हुए जनरली आपनकर ए मिंडर्स एस शेप रो थांती को शेप रो ना एस शेप रो थांती एंड ऑक्सबो लेखले आपनकर कोन मिंडर्स जोटी कट डाउन होंदी सेठी आपनकर लेग फॉर्म हुए हैला and from the upper course due to the vertical erosion or the high river velocity आपनकर dip narrow and हमें कहि परिबा step sided valley सब फॉर्म हुए जोटा को हमें जेन्युइनली कोन कहउचे ना गंड बोली कहउचे हैला नेक्स्ट आसा तमे ते पायल को काई खोजुचो गायत्री who among the following authorities acts as the vice chairman of the concerned zonal council on rotation basis for a period of 1 year tell me quick कौन कोई जी क्वेश्चंस रे now who act as the vice chairman of the zonal council on the rotation for 1 year rotation पर किए सेइपा फाइल क्लास रे अछि पूरा हार्ट वाला स्माइल देलनी राइट आंसर कौन दबा यस तो एते टाइम पर त मानकर राइट आंसर आसिला ना कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ये हम राइट आंसर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट काहे डीजीपी ऑफ द स्टेट हबनी कारण डीजीपी विल बी द सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर आपण मान जानि संदी कि पार्टिसिपेट करंती सिक्योरिटी डिस्कशंस लाइक काउंसिल ल सिक्योरिटी डिस्कशन रे आपनकर पार्टिसिपेट करंती सबले डीजीपी ही नेवर सर्व्स एज द वाइस चेयर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन पे हबनी बिकॉज़ ही इज द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट नेक्स्ट आसले आपनकर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट तांको हमें कंसीडर करू छे हां that as he was act or he acts as a vice chairman on 1 year rotation among the member of the states union रा होम मिनिस्टर थांती and आपनकर चेयरमैनशिप करंती एठी आपनकर स्टेट लेवल चीफ मिनिस्टर थांती जोनल काउंसिल रे आपनकर की चीफ मिनिस्टर अबाउट द स्टेट लेवल ले आपण माने एठी मेंशन करंतु जदि आपण माने यूनियन बजट माने यूनियन को कंपेयर कले सेंटर को कंपेयर कले एठी आपनकर होम मिनिस्टर अछंती हैला एठी चेयरमैनशिप करंती एतिकी जिंस बुझी परिबो तो गवर्नर ऑफ द स्टेट ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट छाडी दियो तम पूरा हैला नेक्स्ट मते को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 had केतेटा शेड्यूल 1935 अकॉर्डिंग कहिला केतेटा शेड्यूल मते कहिला 1935 अकॉर्डिंग को केतेटा शेड्यूल टोटल हे 8टा शेड्यूल कौन सब मारुचो 8th schedule of the constitutions about the languages government of India act 1938 had more than 8 yes had more than 8 हमें कहि परिबा केते had more than 8 that is 10 मन इच्छा कोन 8टा मारुचो लैंग्वेज कथा पचारिले 8टा कहिबो ना लैंग्वेज कथा पचारिले 8टा कहिबो एमती कोन मन इच्छा आंसर चलो सो टोटल हमें कोन कहउचे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुडे यदि कंसीडर करिबा टुडे has 12 schedules but 1935 according जदि पचारिबो क्वेश्चंस रे ताहाले मन रखिबो 10 कहबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केतेटा थिला 321 टा सेक्शन थिला 10 टा शेड्यूल थिला हां नाउ पचारिले आपण माने 12टा कर देबे बट 1935 अकॉर्डिंग पचारि छी 1935 अकॉर्डिंग जत्ते बेले भी क्वेश्चन पचारिबो तो सेक्शंस ऑलवेज 321 सेक्शंस केते रहै छी 321 sections and here आपनकर केतेटा ना 10 schedules हला later on हमें कहि परिबा largest constitutional act passed by the British parliament introduce हेतिला जोटा कि आपनकर फेडरल कोर्ट अंडर 1937 रे समस्तेटा को मानथिले आफ्टर दैट एबे जदी पछरा गला आपन माने मन रखिबे टोटल केतेटा ना 12 as of now हला चल नेक्स्ट So, the Government of India Act 1935 has 10 schedules. This act was the largest passed by the British Parliament to date. Okay, next, in which year was the Indian Press Act, a law that granted the government extensive powers to control the press in India, that is passed kebe heitila 1910, 1911, 1912, 1913. Kebe heitila mate kahilo? Question number 11.
1910 भी आसुची 11 भी आसुची नो जो माने 1910 केते जण कहूछ @अमित 1911 जम्मा भूल हबनी आ जदि मैं को भूल करि देली ताहाले कोन करि परिबो 1911 जदि भूल करि देली ताहाले कोन कहिबो त माने 1910 रे त हेइथिला एटा एनाक्टेड हेइथिला मते को द इंडियन प्रेस एक्ट एनाक्टेड इन 1910 हां ताहाले 10 हबो यस हां 1910 रे हेइथिला आमे कहि परिबा लॉर्ड मिंटो कि एटा को इनैक्टेड करिथिले अंडर लॉर्ड मिंटो ये दी तीन जण जदि रॉन्ग आंसर मारि देले बाकी सब एम्ति कॉन्फिडेंटली आंसर मारुचंती कि जेमिति पूरा माने कोन कहिबि त मानकु बही पूरा पढी कि पूरा पानी कर देचो ना कि हां सफल ही खाओ तुम माने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. So the Indian Press Act was passed in 1910 during the tenure of the Viceroy Lord Minto II to impose the strict control over the press. Next, which of the following rights to considers a component of the right to life and personal liberty? कौन अच्छी थी right to life and the personal liberty कथा पचारी देची. को मते question number 12. Which right is considered a component of Article 21 right to life and personal liberty? कौन हमारा right answer? Quickly. Privacy very good. Polity टा पूरा पढ़ी देचो ना कि पूरा लक्ष्मीकांत को घोसी की बाटी की पूरा ग्राइंडिंग करके पी देचो. So right answer कौन हबो? एठी right to privacy. कौन ना right to privacy. पर्सनल लाइफ कथा मैला ले कोन कहूची तेल पर्सनल लाइफ कथा अपन माने को पछारुची अरे मोर कोन किछि गोटे प्राइवेट लाइफ नै कि तमन यदि सब कथा मते पछारी दोछ जेंति मोर किछि प्राइवेट लाइफ नाही मु तमन का आगे से शेयर करबी ते कुह आम भीतर भी गोटे रिलेशन अछि स्टूडेंट टीचर हैज अ रिलेशन बट गोटे लिमिट है हां ना नहीं प्राइवेट कथा पछारिले दैट इज द राइट टू प्राइवेसी तमन मते पछारी परिबो नाही एटा मो राइट टू प्राइवेसी अछि तो मु तमन को शेयर करबी नाही हां ना नहीं को यस चलो सो हाँ तो ऑप्शन ए अपन कौन कहूची राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मते को हाँ so that come under the article 19(1)(a) and that not the part of the article 21 under ये अपन बिल्कुल आसीबनी राइट टू इक्वालिटी हेले अपन मानकर आर्टिकल equality 14 to 18 भीतर आपन right to equality पड़े आसीबो ओके दैट इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ देन अगेन राइट टू प्रॉपर्टी एटा आपन आर्टिकल केते आसीबो कहला 19(1) ए रे नै एफ रे तो एटा आपन ए 19 नहीं आसीबो हैला आर्टिकल 19 रे ये आसी जीवो हां जीवा 19 रे आपन प्रॉपर्टी आसीबो ना 19 आपनकर प्रॉपर्टी ये आपनकर 21 रे आसीबो सॉरी फॉर दैट ये 21 रे आसीबो ये आपनकर 19 हैला चलो माने राइट टू प्राइवेसी आपन मानको माने मेंटेन करिया को पड़िबो डाटा प्राइवेसी पर्सनल ऑटोनॉमी ह ना नहीं बॉडीली प्राइवेसी तदे इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी तो ये सब निजे निजे सिक्योर करि पारिबो नोबडी कैन फोर्स यू टू टेल ओके सो यू गाइस कैन चलो. So the right to privacy has been recognized by the Supreme Court as an intrinsic part of Article 21, right to life and the personal liberty. Next. If a national emergency is in place under Article 352, if a national emergency is in a place under Article 352, then the Parliament can extend the term of the Legislative Assembly for what at a time को पर्यंत एटा करि परिबो अप टू 6 months अप टू 1 month अप टू 9 months और अप टू 1 year के पर्यंत करि परिबो टे कहला जल्दी 6 months कोथि पई काई आउ 6 मास गडे परिबोनी कि कोथि पई मते को 6 months that can apply to the president rule article 356 renewal हेज आपनकर that is not a national emergency प्रेसिडेंट्स रूल रे 6 मास हबो गद्धस एंड गद्दी स्थल
एटा जदि आपनको प्रेसिडेंट रूल कथा पचारिबो का कथा प्रेसिडेंस रूल कथा पचारिबो ताहाले एटा आपनकर 6 मंथ हबो हाना नै को बट एबे आपनको पचारिछि पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ द पार्लियामेंट कथा पचारि देछि बुझि पारिलो ताहाले आपनकर केते ना अप टू 1 ईयर पर्यंत से टाणी परिबो nobody can oppose it so during the national emergency parliament may extend the term of the state assemblies 1 year at a time that cannot extend beyond the 6 months after कोन emergency end एत्ती की बुझी पारिलो क्लास कम सिनेमा हॉल बेसी लागो छी धन बाबू कोन सुबेंगर चालू छी आसा नेक्स्ट मते कहइबो तो फर्स्ट 3 digits of the magnetic ink character recognition number on your check specifies the गोटे फास्ट आपण माने चेक बुक कहार भी थिबो घरे भी बापा मांकर थिबो आपण माने चेक करिथिबे तो फास्ट आपनकर किछि गोटे मैग्निफाइंग डिजिट्स देखा जाय ओके तो एठी कोन पचारुछि ना एटा आपनकर कोन बैंक रिलेटेड the code that is the bank code in which you have the bank account that is the branch code that is the city code or the country code no matter आपण माने एलिमिनेट ताकू कर दोथबे कोन सिटी कोड कोन हेथिबो कि ना निहाती से ब्रांच रो कोड न हले बैंक रो कोड हेथिबो हन नहीं बट तम माने होच गोटे गधस एंड गधिस हन नहीं मते को सेथिरे जो थाए तम माने नंबर खाली मन रखिचो इटो गोटे नंबर लिखाई थाए सेटा आपण मानकर जमा भी ब्रांच कोड आज्ञा माने न थाए सेटा आपनकर कोटारे कोड थाए से आपनकर सिटी कोड थाए आसा सो द फर्स्ट 3 digits of the magnetic ink character एठी आपनको टोटल सबुतिका पचरिनी because you are the most गधस एंड गधिस तमे माने मारिबो कोन ना आपनकर बैंक कोड न हले ब्रांच कोड मारिबो बट जदि टिके मन ध्यान दे कि पढिबो ए क्वेश्चन sta फर्स्ट 3 digit पचरिछि that is the magnetic ink character recognition जोटा हमें MICR बोली कहूचे that is number on a check specific that कोन ना सिटी कोड आ थरे देखो कोन कहूची ना सिटी कोड बोली ताकू कुहा जाउची the bank code is represented by the 4th 5th 6th and 4th 5th 6th digit पर्यंत MICR जदि आपनको 4th 5th 6th कथा पचारि देला ताहाले कहइबो सेटा होची बैंक रो कोड ना 4 आउ थरे कहूची मने रखो जते बेले बैंक रो कोड पचारला 4th 5th and 6th ए तीनटा को नै कि आपनकर कोन एटा बैंक रो कोड आपनको शो करिवो ए डिजिट मान को नै MICR रो ए डिजिट आपन मानकर बैंक कोड को शो करिवो whereas only first 3 digit आपनकर सिटी कोड को डिजिट माने रिप्रेजेंट करिवो that is based on the pin code of the city clear that identifies the spotting location clear country पाई न थाय that is MICR is identify माने इंडिया स्पेसिफिक ही अछि MICR is definitely for the India specific चलो नेक्स्ट मते कहइबो काई एमती होउछ तो मन को गाली करिया बिल्कुल मु मूड रे नाही आई मीन डिफरेंट मूड बहुत सारा काम मोर अछि आफ्टर एंडिंग द सेशन एमती हुआनी कि तो मन को गाली करिवि बुझिलो आ जते मूड न थाय मु गाली करे सेते भयंकर गाली करे बिलीव मी आसा in economics which of the following concept in economy which of the following concepts is defined over a period of time quickly kuha mate quick in economics which of the following concepts is defined over a period of time only flow only stock both flow and stock or both केबे भी हबनी लोपा एटारे आपनकर इकोनॉमी ले जति आपन माने इकोनॉमिक्स लिखुचंती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट डिफाइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपनकर ओनली फ्लो ऊपर ही डिपेंड करिवो का परे ना ओनली फ्लो ऊपर यस वेरी गुड जाओ माने एते गधी मु नाही इकोनॉमी ऊपर किछि आईडिया अछि यस ओनली फ्लो ऊपर ही आपनकर हबो फॉर एग्जांपल आपन नै परिबे मेजर्ड ओवर अ पीरियड लाइक वीक हैला मंथ हैला ईयर हैला that example is something income tax ऊपर हैला ना इनकम टैक्स नहीं माने इनकम तो माने कोन करूछ
एक्सपेंडिचर केते करूछ प्रोडक्शन केते आसुची जीडीपी केते रहउची इन्वेस्टमेंट केते रहउची तो ए सब आपण मानकर गोटे फ्लो रे माने गोटे वीक पई कैलकुलेट हुए एल्स गोटे मंथ पई कैलकुलेट हबो और एल्स गोटे ईयर पई कैलकुलेट हबो बट ओनली स्टॉक हेले कोन हबो दैट इज द मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सिंगल गोटे पॉइंट रे देखि परिबे सपोज एग्जांपल अपन नै परिबे टू वेल्थ हैला कैपिटल हैला इन्वेंटरी हैला मनी सप्लाई हैला तो या ऊपर आपण माने नै कि कोन ताको कैलकुलेट करि परिबे जेतले बोथ फ्लो एंड स्टॉक आसी जिवो से केस रे आपण माने कोन करि परिबे एसएससी क्वेश्चंस रेलवे रे बाबा पड़े क्वेश्चंस डोरेमन हैला सो बोथ फ्लो आपण कर केबे होइनी बिकॉज़ ओनली फ्लो इज डिफाइंड ओवर ए पीरियड स्टॉक इज ऑलवेज पॉइंट स्पेसिफिक तो स्टॉक एंड फ्लो बोथ हबनी कारण गोटे फ्लो आपनकर कोन पीरियड अकॉर्डिंग हमें फ्लो को चेक करूचे बट स्टॉक हेले गोटे पॉइंट को हमें चेक करूचे बुझियला चलो नेक्स्ट in economics flow concept like income production that आपनकर असला कोन ओनली फ्लो आसो as per census 2011 which of the following streams of migration has the highest percentage कोटा हबा मते कहिलो जल्दी as per the census 2011 which of the following streams of migration has the highest percentage कहार अछि जल्दी कहले टिके 2011 according quick yes that is the rural to urban काहे रे rural to urban कोथि पई हबो rural to rural अगर strong हो तापरे rural to urban आसीबा तो rural to urban हे गेले अपन मानकर कोन हबो that is the major stream of the economic migration but एठी कोन पचारिची ना streams of migration कोन पचारिची streams of migration बुझी पारुछ ना urban to urban हेले कोन हबो ना job transfer को नै कि हबो education को नै कि हबो marriage को नै कि हबो urban to rural हेले कोन हबो that happens due to the marriage only agricultural return migration को नै कि हबो but rural to rural कोथि पई हबो ना largest migration streams 2011 में हमर record हेतिला mainly due to the marriage migration of the women like major factor आपनकर women मानकर माने marriage ही थिला that accounts for almost 50% of the total internal migration clear so right answer what will be the that is the rural to rural next asa mate ko which of the following goals of the 5-year plan is directly related to the people हो जल्दी 5-year plan कोटा आपनकर डायरेक्टली कहा सहित ना लोक मानक सहित कनेक्टेड अछि मते कहिलो जल्दी क्विकली कहिबो सेल्फ रिलायंस केमिति हबरे बाबा माने सेल्फ रिलायंस केमिति सब आंसर मारुछ यस मौसुमी that will be the equity कोन हबो ना that will be the equity because the self reliance focuses on the reducing dependence on the foreign goods and the imports ता ऊपर आपण मानकर रिड्यूस करबा डिपेंडेंस को बट इनडायरेक्टली दैट रिलेटेड टू द पीपल मोर इन द इकोनॉमिक और नहीं मते को तो ग्रोथ हेले कोन कहउछ ना दैट अबाउट द इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम जते बढ़िबा हमें कहउछ हमर ग्रोथ सेते होउछ और नहीं मते को और नहीं को बट मॉडर्नाइजेशन कहले कोन हबो जे आपनकर अपग्रेडिंग करूची टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूशंस रा अपग्रेडिंग होउची द स्किल्स मानकर अपग्रेडिंग होउची द पीपल ओरिएंटेड कोन जते सब प्राइमरीली हमें कहि परिबा कोन डायरेक्ट वेलफेयर ही होना नहीं को बट इक्विटी कोन कहउची ना डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पीपल्स वेलफेयर that focuses on the reducing the poverty reducing the inequality your battery is remaining low okay बुझी पारला that ensuring the fair distribution of the income and हमें कहि परिबा addresses the social justice कोन ना directly so that is related with what na equity clear बुझा पड़िस चलो next so when natural resources are unlimited the populations grow very rapidly this accelerating pattern of increasing population size is called कौन कहउछ हम ताकू कहले जल्दी टिके क्विकली को यहाँ को निद लागुची से सोई पड़िबे मैं तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता होना नहीं so when resources are unlimited the population grow rapidly resources unlimited रहिले ही तो लोक माने खाई पी के पूरा हेनी मारिबे होना नहीं मते को मैम टिके साइड ना साइड हेबिनी गायत्री पीडीएफ त मानको दोउची ता परे भी तमारे मते साइड करिया कहबो हां सर तो कौन हबा राइट आंसर मते क्विकली को
Option C. Yes, that is the exponential growth. Population explosion that means very rapid rise in the population. That is the population explosion. Carrying capacity the maximum population at the environment maximum population environmental growth को support करिवो. The maximum population that environment can support, that concept from logistic growth हमें कहि पारे जोटा कि S-shaped curve रे आसी जाए. ताको हमें कहिबा that is related with what? That is the population, sorry, carrying. Okay, then आसिला exploitation विषय आपण जानि सन, that is the J-shaped. एटा carrying आपनकर S-shaped आसीबो, exploitation आपनकर J-shaped आसीबो. एटा आपण माने इकोनॉमी को टिके भलो से पढले जानि परिबे हैला. चलो तो लास्ट क्वेश्चन कोन रिलेट कर देबा. अच्छा और दुईटा क्वेश्चन 20 रे रखिबा. ड्यूरिंग व्हिच पीरियड वेयर कोल माइंस नेशनलाइज्ड इन इंडिया. ड्यूरिंग व्हिच पीरियड, को पीरियड रे आपनकर कोल माइंस उडा नेशनलाइज हेतिला इंडिया रे, मते कहिलो को पीरियड. 1971 ରୁ 75 रे हेतिला. केबे हेतिला 1971 to 75 quickly. Yes, the coal mines in India were nationalized in two phases between 1971 and 1973, which falls within the period 1971 to 75. जदि nationalize है कि पिक कुछ हुई थिला केबे कहबा 71 to 73, but खसी थिला 71 to 75 रे भी हो ना नहीं. नेक्स्ट आसो. In which year was the All India Trade Union Congress, that is the AITUC, established? केबे AITUC establish हेतिला कहिलो जल्दी कुआ. AITUC आपनकर establish केबे हेतिला. 1920 पक्का. Yes, because according to the Government of Act 1935 रे 1920 आपनकर establish है. Clear? The All India Trade Union Congress AITUC was established in 1920, making it the oldest trade union federation. Clear? बुझा पड़ला तो. अच्छा, so it was all about your session. Out of 20 गोटे ठीक है तम मानकर. अच्छा तो को टाइम रे को सर मानकर कोन क्लास रहउची, जस्ट हैव ए लुक देन तम मानकर क्लास. तो देखि दियो वेदांग वन डे रे आपण मानकर वेदांग क्लासेस रे कोन कोन रहउची, देन आपनकर वेदांग टीचिंग रे कोटो टाइम रे क्लास रहउची. काली एग्जैक्टली 5 टा रु 6 टा मोर ईवीएस क्लास अछि टीचिंग चैनल रे, जो मानकर रिक्वायरमेंट अछि ईवीएस ऊपर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डू प्रेजेंट एट दैट टाइम. ओके, then आपण मानकर वेदांग सिविल सर्विसेस रे यू नो द टाइमिंग्स एंड एवरी सैटरडे एंड सॉरी फ्राइडे एंड सैटरडे मोर थिला बोदे ताको चेंज कराइ से. ओके, त मंडे मोर अछि लाइक आजी थिला, बट ओवरऑल आजी एथिक्स नै जाइथिले मैम, बट मोर आपनकर वेडनेसडे अछि, मंडे वेडनेसडे एंड द फ्राइडे. ओके, आज क्वेश्चन टिके न्यू पैटर्न नथिला, तमान गुटे टफ लागिला जदी कहिबो म इजी पैटर्न कर दे. ओके, that's depend upon you guys. बाकी मोरोवर आपण माने जदी पीडीएफ पाइबा को चाहउचंती स्कैन करंतु चैनल को, आपण माने एठी पीडीएफ पाइ परिबे. जो माने पर्यंत वेदांग क्लासेस को सब्सक्राइब करिनांती, डू सब्सक्राइब द चैनल. हैला चलो, thank you so much, have a good night, take care of yourself, but first of all do prioritize your parents. This should be your first priority, no one else in the world. Thank you so much, have a good night, love you all, bye bye. अरे ए भलिया क्वेश्चन सब आसुचे एग्जाम रे, तमाने स्किप करी के आसुच जोडा की देखि के तमाने कहूच कि मैम क्वेश्चन लेवल बहुत ही टफ आसुची, हम माने गोटे को टच करि परलुनी. क्वेश्चन डिफिकल्ट आसुची बिकॉज़ तमाने इजी क्वेश्चंस फसी फसी की आंसर करी करी जाओ, प्रैक्टिस करी करी जाओ. टफ क्वेश्चन को देखिले डर हैला. एटा ही गोटे रीजन जोथि पाएंगे तमाने क्वेश्चन अटेंड करि पारनी और आसी के एग्जाम सेंटर रु बाहरी की मैम जीएस बहुत ही टफ थिला बोली को हैला. तो ए सब फियर फैक्टर माइंड रु बाहर कर दियो, हमको सब टाइप रो क्वेश्चन करिवार अछि. ओके, बाय, टेक केयर.